Okay, so hello and good morning. Welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu analysis class. And today the date is 4th of October, and we are starting with the today's Hindu. Fine. But before that, let us quickly have a look at yesterday's questions, and then we'll be shifting to the today's Hindu. First, who among the following won the 2023 Nobel Prize for Physiology or the Medicine? So yesterday we discussed this article briefly. Fine. So it is Kariko and Wisman. Fine. Nobel Prize going on. So yesterday, similarly, we discussed in a Hindu, Nobel Prize were given for this physics, and day before yesterday it was for medicine or physiology. Fine. The next 2-3 days would be important because today it is the day for Nobel for chemistry. Fine, and so on. So second question is, an easy way to make development an appealing proposition for voters is to define it narrowly in terms of visible physical infrastructure. So yesterday we discussed an article written by economics. He's an economist, or you can say the professor of economics, Suresh Babuji from IIT Madras. So he wrote the leading this editorial on the Hindu page was, of course, the leading article on the editorial, that is the narrative of development and populism. We discussed yesterday in detail that how development and populism has this intersection. Fine. So of course populism is a short-term, populist measures are being taken generally with the short-term objective, while development is something which is a long-term process, you can say. So somewhat how we can introduce this topic. So of course we'll be following the same set of a structure, that is IBC, intro, body and conclusion. This question is of 10 marks. So of course you need to write this in 150 words, and for that 3 to 4 lines of introduction would be sufficient. Okay, so how we can introduce this? We need not to go into that what the ruling party has announced, what of course the opposition has announced, but rather you can say that the recent announcements, fine, especially before elections, somewhat show that development and populism gain wide circulation before elections, and that these two are pitched as poll promises with a call to evaluate the gains emanating with respect to short-term versus long-term benefits. Fine. So the most common narrative is that development is a long-term ideal, while populism is dubbed as myopic with development retarding effects. कहीं ना कहीं इन शॉर्ट टर्म मायोपिक जो स्टेप्स लेती हैं सरकारें या पार्टीज, उनके हमें रिटार्डिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं ऑन डेवलपमेंट, विच इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और प्रोसेस. So how you can build on the body part of your answer? So of course the first heading that you can use is the development obsession that we discussed yesterday. The second head that you can use, of course, after this development obsession, and you just need to use further subheads and elaborate on this, at least use 3-4 points. जैसे कल इन्होंने 2 पॉइंट डिस्कस किया था, साथ में उसको उस पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए 2 एग्जांपल्स भी इन्होंने दिए थे, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के, तो आपने सेम वो पॉइंट्स लिख लेने हैं, अपने आपकी बॉडी में होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड मेजर हेड जो आपकी बॉडी का आंसर की जो बॉडी है उसका बनता है, दैट इज स्पेस फॉर पॉपुलिज्म. फाइन. So here too we need to mention the 2 dimensions that we discussed yesterday, that is political populism and economic populism. Fine, and how these are the different. Fine. So this is second heading. Now the last heading, the third and last heading for this question would be, of course, the conventional models, where we discussed that somewhat the models of development talks about the trickle down, this effect of development. Fine. Which has not been the case even in India, that we discussed yesterday. So this is how in the 3 headings you can complete your body part of the answer, and ultimately you need to conclude, and you can conclude of course on the positive line, or you can say both the way. For example, you can say that at times it might be the only way to forestall the dangerous obsession with the physical infrastructure-led development, or you can further say an easy way to make development an appealing proposition for voters is to define it narrowly in terms of visible physical infrastructure, which might retard the development or the overall economic growth, fine, and development. So this is how you can complete or conclude your answer.
complete IBC. That's it from yesterday's questions. So let us quickly start with today's newspaper itself. Quickly have a look at the front page or the first page. So what are the relevant things from here? You can see Trudeau clears the air, Canada not looking to escalate situation, fine, between India and Canada. Recently कल हमने डिस्कस किया था कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मालदीव्स में, एंड व्हाट ही सेड will remove Indian forces from the Maldives. So this seems that this man is not going to have a sound relation with India as far as concerned. So we'll keep tap on this, that how the bilateral relations going to unfold post he takes the charge of presidentship of Maldives. India's GDP to grow at 6.3% in financial year 2024, and of course rest two things are from the sports. So here we have the yesterday's Nobel Prize were given in the area of physics, of course. So you see Fiat Lux, Pierre Agostini, Ferenc Krauss and Anne Huyler have been awarded. Three persons awarded 2023 physics Nobel Prize, and for what good reason they have been awarded this awarded. So you can see from 1987, Dr. Huyler et al. Found, explained and redefined the principles of producing attosecond light pulses. Now, what is attosecond? So, attosecond is, remember, is 1/1000th of a nanosecond. Fine. Electrons in a matter move very fast, interacting on the order of a few hundred attoseconds. Attosecond physics now deals with the ways to capture these interactions between the electrons. Fine. And further, you can see in 2001, Dr. Agostini produced a series of pulses using these principles. Apart from this, the third person is also in 2001, Dr. Krauss. So, is isolated a single pulse of 650 attoseconds duration. Using this, he measured the kinetic energy of a bunch of electrons emitted by krypton atoms. ठीक है, so kinetic energy मेजर किया था इन लोगों ने, इसलिए इनको ये दिए गए. Now why is this important? Why their discovery is important? So attosecond physics provides scientists with the ability to look at the minutest particle at the shortest time scales, and attosecond is 1/1000th of nanosecond. The Nobel laureates developed experiments to produce ultra fast laser pulses which can be used to understand the world at a really minute scale with applications across chemistry, biology and physics. ठीक है, so इसकी जो application है that has not been restricted only to the physics but even to the biology and chemistry. ठीक है, so इसलिए discovery जो है important है. Apart from this, there are two things, two news. So NewsClick founder arrested under UPA. You can see this. Rest not important. So next from the city page, so those from Delhi joining this, you can have a look at it, cursory look at it. Rest can skip these pages. Next you have a states page where you see lots of politics only, fine, and at times some important things as well. So at least we need to have a look at it. ठीक है, okay. So again, sports page, this states page. So more or less you have politics here. तो इसको आप skip कर सकते हो. Here too we have politics only. सो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट न्यूज में है बिकॉज एक पीआईएल फाइल की गई थी मद्रास हाई कोर्ट में, इसने एंड मद्रास हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है अगेंस्ट द कुंडनकुलम प्रोजेक्ट. कुंडनकुलम जो पावर दिस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बेस्ड है. तो दिस इज बीइंग लोकेटेड इन तमिलनाडु, आपको ये चीज आइडिया हो. एंड साथ में ही ये भी 1 सेकेंड, ओके, अगेंस्ट कुंडनकुलम प्रोजेक्ट. So you can see
It was fired, the PIL was fired in 27 against the first pour of concrete for units 3 and 4 of the Kundan-Kulam nuclear power project without complying with the norms or restricting the population growth in the sterilized zone. ठीक है, स्टेरिलाइज जोन कौन सी जोन होती है? द एरिया विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइज जोन मतलब क्या. प्लस कुंडलकुलम है कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. ओके, so finally we are on the editorial page, and what articles are important from the today's page, let's say it quickly. And of course there is one article which is related to on this page Nobel Prize itself that we discussed, Nobel Prize for medicine or physiology. So he is saying the trouble with the Nobel for mRNA COVID vaccine, कि क्या ट्रबल है जो इसके लिए नोबेल दी गई है mRNA कोविड वैक्सीन के लिए, इसके साथ क्या दिक्कत है. तो यहाँ पे एक बड़ी ही इट वुड बी काइंड ऑफ रिवीजन फॉर अस. ठीक है, कि कोरोना के टाइम पे कैसी चीज़ें हैंडल की गई, कौन सी वैक्सीन किस टाइप्स की थी, प्लस कोवैक्स क्या था, फिर से इंडिया के लेवल पे क्या अप्रोच रही है, कॉर्बेवैक्स क्या है. ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर. इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन फ्रॉम द पैंडेमिक टाइम्स. सो 2023 नोबेल प्राइज किसको मिला, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन के थ्रू भी डिस्कस कर चुके हैं, कल भी हमने देखा था. सो he is saying that the prize for the Nobel Prize for medicine acknowledges work that has created benefit for all mankind, but if we had to be stricter about holding scientific accomplishment up to this standard, the subset of mRNA vaccine used during the COVID-19 pandemic may not meet it. ठीक है, कि जो नोबेल प्राइज दी गई है और जो ये कहा गया है कि दिस वाज फॉर ऑल मैनकाइंड, दिस माइट नॉट बी ट्रू अगर हम और चीज़ों को ध्यान दें. क्यों? क्योंकि रिमेंबर ये लोग जो हैं ये कनेक्टेड एसोसिएटेड थे किससे, मॉडर्ना एंड फाइजर, जो दो वैक्सीन हमें देखने को मिली थी. दैट वाज ऑफ कोर्स mRNA वैक्सीन इनिशियली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, बट उसकी जो यूज थी वो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली यूएस, कनाडा एंड ऑल, इन लोगों ने अपने लिए पहले होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मतलब पहले इन्होंने कहा कि हम अपना देखेंगे, उसके बाद कुछ और. प्लस एक बड़ा मुद्दा अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो WTO में चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो पेटेंट राइट्स हैं ट्रिप्स के अंडर, वो अभी के लिए सस्पेंड कर दी जाए. ठीक है, सो इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज ने बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, बट इस चीज़ को अगेन वेस्टर्न नेशंस ने कहीं ना कहीं अपोज किया था. ठीक है, प्लस कंपनीज, क्योंकि MNCs हैं तो नो डाउट इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत कुछ लगता है, आफ्टर टाइम भी लगता है उसके बाद. सो दे वर लाइक कि हम कैसे इस चीज़ को फ्री कर सकते हैं. So Dr. Carico and Dr. Wiseman and others deserve to win the prize for their scientific accomplishments. Instead, their trump tells us something important about the world in which science happens and what for all mankind should really mean. Okay? Dr. Carico and Dr. Wiseman began working together on the mRNA platform at the University of Pennsylvania in the late 90s. The university licensed its patents to mRNA therapeutics, which sub-licensed them to the CellScript, which sub-licensed them to Moderna and BioNTech for this million. So you can see कि how this Moderna जो vaccine थी, that is and of course over the time the company enlisted Pfizer. Moderna ने Pfizer का जो vaccine बनाई थी mRNA based vaccine to develop its mRNA vaccine for COVID-19. तो देख सकते हो कि ये लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे. ठीक है, एंड ये हमें फाइनली फाइजर के रूप में जो mRNA वैक्सीन देखने को मिली थी इनके रिसर्च के बेस पे, एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक फंड. सो मच ऑफ द नॉलेज दैट अंडरपिन्स मोस्ट न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीन इज अनअर्थ्ड एट द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक फंड्स. ठीक बात है कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, बट अल्टीमेटली रिसर्च भी बहुत लंबे टाइम तक चलती है. ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट इज मोर रिस्की एंड प्रोट्रैक्टेड, काफ़ी लंबा टाइम तक. When scientists identify potential biomolecular targets within the body on which a drug could act in order to manage a particular disease, followed by, so you can see कि पैसा जो है वो जबरदस्त लगता है यहाँ पे इन्होंने एक एस्टिमेट भी दी है. Identifying suitable chemical candidates, the cost and time estimates of this phase, cost and time are in the range of $1 billion to $2.5 billion and several decades. Fine. बट इस बार हमने देखा था कि जो वैक्सीन बनी थी बहुत कम टाइम में बन गई थी, बहुत ही फास्ट स्केल पे. हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हमें देखने को मिला
इन द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट की फर्स्ट टाइम बहुत ही जल्दी जो है वैक्सीन आ गई थी कोविड के लिए। सो कंपनी सब्सिक्वेंटली कमोडिटाइज, क्योंकि अगर इतने टाइम और इतने पैसा इन्वेस्ट करके अगर कोई कमोडिटी डिस्कवर कर रही है कुछ इस तरह की वैक्सीन या ड्रग्स, सो ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू कमोडिटाइज एंड कमर्शियलाइज द सेम, ठीक है, raking in millions in profits typically at the expense of the same people whose taxes funded the fundamental research। ठीक बात है कि जिन लोगों के पैसा उसमें ऑब्वियसली टैक्स मनी इन्वॉल्व थी रिसर्च में, एंड फिर दोबारा से सर्कुलर फैशन में क्या हो रहा है कि अब उन्हीं लोगों से अगेन चार्ज किया जा रहा है फॉर द यूज ऑफ दिस वैक्सीन्स। So there is something to be said for this model of drug and vaccine development, particularly for the innovation it fosters and the eventual competition that lowers prices. But we cannot deny the double spend it imposes on the consumers, ठीक है, including the governments। double spend in the sense कि पहले तो उन्हीं के पैसे टैक्स मनी को यूज करके रिसर्च की गई, ठीक है, उसके रिसर्च के ऊपर डिस्कवरी के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, एंड फाइनली जब डिस्कवरी हो जाती है, जब मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, देन अगेन यू आर चार्जिंग फ्रॉम the users of this vaccine। So this is how it is imposing double cost। Once Moderna and Pfizer began producing their mRNA COVID vaccine, so these are the two companies located in US, so जिन्होंने कि initially mRNA vaccine जो लेके आई थी ये दोनों, ठीक है, जो कि ये दो नोबेल लॉरेट्स हैं, उनके काफी हद तक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड है उनकी रिसर्च बेस्ड। They were also mired in North American and European countries, zeal to make sure they had more than enough for themselves before allowing manufacturers to export them to the rest of the world। So their use in other countries, including India, was also complicated by protracted negotiations over pricing and liability। अगर इंडिया में भी अगर आप देखो तो काफी लेट ये वैक्सीन आई थी, एंड बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इनको यूज नहीं किया गया, मीन्स बहुत ज्यादा सप्लाई इनकी नहीं थी। अल्टीमेटली वी रिलाइड ऑन आवर ओन इंडिया प्रोड्यूस्ड और मेड vaccine। So on COVAX, COVAX was a initiative led by the group of countries alongside of course this WHO World Health Organization, जिसमें ये था कि सारी कंट्रीज जो हैं जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं वैक्सीन, वो क्या करेंगी, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, सो दैट कि ये वैक्सीन जो है वो जो गरीब देश हैं, स्पेशली जो लिस्ट डेवलप्ड हैं, स्पेशली द अफ्रीकन नेशंस, उनके लिए या वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज हैं जो कि अपने लेवल पे इस चीज को परचेज नहीं कर सकते लेटर से या एक्वायर नहीं कर सकती, उनकी हेल्प की जाए। सो इस पर्पस के लिए कोवैक्स करके एक अलायंस बनाई गई थी। द प्रोग्राम टू इंश्योर पुअरर कंट्रीज डिड नॉट बिकम द विक्टिम्स ऑफ देयर subpar purchasing power and had sufficient stock of mRNA vaccines, fell far short of its targets। India, Russia and China exported billions of doses of their vaccines, but their efforts were also beset by concerns that manufacturing capacity had been overestimated in India's case and over quality in Russia and Chinese। So हुआ क्या था कि no doubt हम लोगों ने काफी सप्लाई किया, but दो चीजों का मुद्दा उठा था, that is quality and of course कैपेसिटी की जो प्रोडक्शन की ओवर एस्टिमेट की गई है। एंड हमें देखने को भी मिला था कि कुछ अफ्रीकन नेशंस ने जो है एक्सपोर्टेड जो वैक्सीन थी उसको यूज करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि दे थ्रो अवे द लैक्स ऑफ वैक्सीन डोजेस बिकॉज दे हैड बीन एक्सपोर्टेड टू क्लोज टू देयर एक्सपायरी डेट्स। काफी तब एक्सपोर्ट की गई जब वो काफी क्लोज थी टू देयर एक्सपायरी डेट्स, ठीक है। So the World Health Organization did urge this country to use the expired doses, but such a task presumed an existing base of community engagement and risk communication, which was absent in many of these countries। बिल्कुल ठीक बात है कि जो expired है उसको क्यों use किया जाए। Now the Corbevax। So a counter example to the path that Dr. Carico followed is Corbevax, a researcher at the of course College of Medicine। So इसको भी research की गई थी Houston based Baylor College of Medicine, वहाँ पे and Texas Hospital ने मिलके किया था। But this is different, this is not mRNA based vaccine, rather this is protein subunit vaccine and licensed to India's biological E for manufacturing। They did not patent it, remember, like Moderna and Pfizer, but they made it or gave the license to the Indian biological this pharma company to produce it without having any kind of patent issue, and so fine। So this was लेबल्ड एज इवन इसको ये भी कहा गया था कि नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए इसको लिस्ट किया जाए, क्योंकि ये सोशल सर्विस एंड ग्लोबल वेलफेयर की बात कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी पेटेंट क्लेम्स एंड ऑल।
सो केनिया के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने ये भी कहा था टू यूनाइटेड नेशंस commended the developers for providing sorely needed ethical and scientific leadership. So we cannot blame our scientists for trying to profit from their work. The mRNA vaccine story during the COVID-19 pandemic simply placed an extraordinary premium on altruism on their part. ठीक है, altruism जो आपकी empathy के या welfare purposes के लिए जो भी आप करते हो, charity kind of and all, without having any due regard for claim for the patents. ठीक है. As a result of administrative, you can say, botched decisions, the technology could have benefited everyone during the pandemic, but it did not. ठीक है, क्यों? क्योंकि पेटेंट राइट्स की वजह से इन दोनों कंपनीज ने काफी रिस्ट्रिक्टेड रखा अपनी सप्लाई वर्ल्ड वाइड, एंड इस वजह से जो टेक्नोलॉजी एमआरएनए बेस्ड थी वो हेल्प कर सकती थी लोगों की, बट ऐसा नहीं हुआ वर्ल्ड वाइड. ठीक है, सो हिस्ट्री शुड रिमेंबर व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड व्हाट 2023 मेडिसिन नोबेल क्लेम्स हैपेंड डिफरेंटली. ठीक है, सो ये इसलिए दी गई कि ये मानते हैं कि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी एंड काफी लोगों की वर्ल्ड वाइड इससे हेल्प हुई. मैनकाइंड की यहाँ पे आपको वर्ड मेंशन भी मिल जाएगा. ठीक है, बट ऐसा रियल में नहीं था. ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज राइटिंग. तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए वर्सेस दिस थिंग. अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑडिट टेक्निक्स. ठीक है, कि क्या ऑडिटिंग में एआई टेक्निक जो है या एआई को हम यूज कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल. ठीक है, सो अभी क्या चल रहा है, देयर इज अ साई गोइंग ऑन. साई इज व्हाट, द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, एंड दिस हैज बीन चेयर्ड बाय आवर दिस कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जीसी मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, हु इज द चेयर फॉर द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द G20. ठीक है, ठीक है, ये चेयर है अपने G20 साई के. इन्होंने वार्न किया है कि दैट एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑडिटिंग पर्पसेस मे लीड टू inaccurate findings and emphasized ethics as cornerstone of responsible artificial intelligence. The CAG conducts financial audits. आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप्स की या कौन कौन सी ऑडिट करती है. तो फाइनेंशियल ऑडिट करती है, कंप्लायंस ऑडिट करती है, एंड साथ में परफॉर्मेंस ऑडिट भी करती है. तभी आपको पता लगता है कि हाँ इतने की बजट थी, इतना सरकार ने खर्च किया, यहाँ पे गैप है, लूपहोल्स हैं, यहाँ पे करप्शन या स्कैम हुई है. ठीक है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट के बेस पे पता लगता है. सो 3 तरीके की ऑडिट करती है, आपको ध्यान होना चाहिए, फाइनेंशियल, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस. द ऑडिटिंग चैलेंजेस ऑफ एआई इंक्लूड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड अवॉइडिंग बायस. ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल एआई जो है दैट इज मस्ट बी एथिकल एंड इंक्लूसिव. बिल्कुल ठीक बात है कि एथिकल हो एंड इंक्लूसिव हो. Only ethical AI can add credibility, trust, and scalability to the CAG audit. Data sets must be complete, gathered on time, accurate, available, and relevant. सब कुछ टाइम पे होना चाहिए with the propensity of ethicality and inclusivity. Data sets must be complete, gathered and available on time. If integrity of the data fields is not ensured, we'll have inaccurate audit findings. The AI auditor must be extra vigilant about the risk of inherent AI data bias. If data are taken from unauthorized sources like social media, where data manipulation and fabrication are common. ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम हेल्प लेते हैं इन ऑडिटिंग, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, जो एथिक्स है वो हो, साथ साथ में इंक्लूसिविटी भी हो. ऐसा नहीं कि वो डेटा सोशल मीडिया बेस्ड या न्यूज़पेपर बेस्ड कोई डेटा उठा लिया और उसके बेस पर ऑडिटिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं होंगे. इंडिया नीड्स एआई रेगुलेशन. बहुत टाइम से ये बात चल रही है कि सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड ही सारी कंट्रीज को मिलके एक एआई रेगुलेशन के डायरेक्शन में इन्होंने बात भी की थी ड्यूरिंग G20 डिस्कशन, कि वर्ल्ड लेवल पे एक कॉमन जो लॉ है या गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो तैयार करने की जरूरत है फॉर रेगुलेटिंग द एआई. एंड इसमें इंडिया को भी स्टेप्स लेने की जरूरत है, इसमें कोई अनडिनाइबल फैक्ट नहीं है ये. ठीक है, जैसे हमने देखा था चैट जीपीटी वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर एआई दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो जरूरी है दैट इज एड्रेसिंग लीगल implications relating to content ownership is a formidable task before us or the before country. AI bias is an inherent risk originating from the human bias that is added. तो ऑफ कोर्स बायसनेस देखने को हमें मिल सकती है, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर में भी बायसनेस देखने को मिलती है, टू द डेटा सेट ऑफ मशीन लर्निंग
एलन मस्क जो है इन्होंने wants to address these concerns by developing truth GPT, ठीक है, a maximum truth seeking AI. Fine. So Elon Musk is planning to come up with the truth GPT, ठीक है, that will be based on maximum truth seeking AI, artificial intelligence. His vision of harmonious fusion of technological progress and ethical consideration poses significant challenges. A multifaceted approach may be required to mitigate bias and ensure the safety and accuracy of AI models. Fine. Even UK Prime Minister Rishi Sunak said that he wants to make the UK the geographical home of AI safety. ठीक है, regulation. अच्छी बात है. It is time for India also to take a cue from the EU, European Union, and make appropriate legislation about the use of AI system. ठीक है. Challenges before the CAG क्या है? The CAG faces many challenges in auditing AI systems. AI regulation and data standardization are critical since the data for various government entities are taken from different sources and are stored in multiple divergent platforms. The AI auditor will face enormous risk and challenges. ठीक है, और biasness यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है. Audits cannot be based on big data from unauthorized sources. तो सबसे जरूरी है कि जो सोर्स है वो भी ऑथोराइज होनी चाहिए. ठीक है, another challenge. Data integration and cross-referencing become cumbersome. The data platforms of all entities must be synchronized through the government's IT policies, information technology policies. According to CAG, one Indian audit and accounts department, one system, a web-enabled IT application is going to support multiple languages, offline functionality and a mobile app. So आपको पता होना चाहिए one Indian audit and accounts department, one system. CAG की एक डिपार्टमेंट है जिसका कि एक वेब एनेबल पोर्टल है, दैट इज वन सिस्टम, दैट इज मींट फॉर ऑडिटिंग एंड ऑल, मोबाइल ऐप enabling complete digitalization of the audit process from April 1st, 2023, with only one exception, the defense audit because of security dimensions. So remember, not all audit come under this one system platform or one system platform ambit, but exception जो है that is for the defense audit considered because of security concerns. The SAI G20 conference emphasized the need for a common international audit framework relating to AI. At present अगर बात करें तो auditors can only adopt and adapt existing frameworks and regulations relating to IT as there are limited precedents for AI use. अभी तक कोई खास हमें ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता वर्ल्ड वाइड जहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वाइडर स्केल पे यूज की गई हो फॉर what purposes? For auditing purposes. The national audit institutions needs to communicate with all the stakeholders. The existing definitions and taxonomies for AI must be examined to adopt what is legally acceptable. ठीक बात है. Since there is wide variance among AI system and solutions, the auditor must adopt an appropriate AI design and architecture while defining the auditor's objective. So इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा before allowing the AI to audit the data sets. Audits की objective क्या है, scope क्या है, approach, criteria and methodology. There needs to be capacity building of auditors in varied aspect of the AI technology landscape as well. कि जो भी auditors हैं हमारे उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, एक्वेंट करना पड़ेगा with this AI, artificial intelligence based auditing. And apart from this, AI audit assignments में AI based जो audit assignments होंगी may require consultation with data scientists, data engineers, data architects, programs and AI specialists. AI outsourcing to third parties while using cloud computing implies the risk of the third parties having control of the infrastructure. बिल्कुल ठीक बात है कि हम इसको outsource नहीं कर सकते, स्पेशली क्लाउड कंप्यूटर की बात कर रहे हैं आज या क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं तो हम थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं कर सकते दिस टाइप ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज इट पोजेस सर्टेन रिस्क. ठीक है, AI domains risks such as big data, machine learning and cyber security must be documented in risk and control metrics. तो इन तीनों चारों चीजों की हमें ध्यान कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी इन चीजों पे. उसके बाद कंप्लायंस इश्यूज भी हैं. Global organizations have developed many AI auditing frameworks. These include the COBIT, not COVID, it's COBIT,
framework for AI audit, the US Government Accountability Office framework, and the COSO ERM framework. The UK's Information Commissioner Office has published draft guidance on AI auditing framework. So data protection impact assessment, that is DPIA, are legally required if organizations use AI system that process personal data to avoid potential risk. So इसके लिए हमारे data protection impact assessment जो है that should be in place before we move further in this direction. The AI auditor must ensure that personal data is processed in a manner that guarantees appropriate levels of security. ठीक है? With a few frameworks available for auditing AI, auditors can only focus on the risk, controls and governance structure. ठीक है कि ऑडिटर्स को है जो तीन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, रिस्क पे, कंट्रोल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर that are in place to determine whether they are operating effectively or not. ठीक है, so very good article again, you can say, giving insights about how AI can be used in auditing. ठीक है, the supreme body which audits, the accounts, the books of accounts in India is of course the CAG, Comptroller and Auditor General. अभी क्या हुआ कि शटडाउन कर दी है अफगानिस्तान ने अपनी एम्बेसी इंडिया में. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन? सो लेटेस्ट खबर यही कि सितंबर 30 को एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली कैरिंग द सील ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान अनाउंस द क्लोजर ऑफ एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान इन दिल्ली. ठीक है, तालिबान वहां पे रूल कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि रिलेशंस इतने अच्छे नहीं चल रहे हमारे. The consulates in Hyderabad and Mumbai have not shut down yet. The consulates will continue to function. ठीक है, so embassy and consulate, embassy में हमारे ambassadors, consulate में consulate general of the respective countries होते हैं. ठीक है, जिनके पास कम पावर होती है compared to the just power होती है visas and all issue करने की. So consulates will continue to function as a part of solemn commitment towards thousands of Afghan students, refugees and traders residing in India. The Taliban has been urging India to support it with its economic revitalization through projects like electricity generation and road building works. India, however, has not yet indicated that it will review its position on Taliban. क्योंकि India is a votary or the supporter of, democratic elected government and not a terrorist-led country or terrorist-led government. ठीक है, so इसलिए हम अभी जो है काफी कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहे हैं इस पे. अभी क्या हुआ कि नगोर्नो काराबाग जो रीजन है जो काफी सालों से कॉन्फ्लिक्ट में है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, finally the standoff between the two has ended. And how so it has happened? It has finally happened because अजरबैजान जो है इसने फुल कंट्रोल जो है वो कर लिया है किस इस टेरिटरी को, नगोर्नो काराबाग को. ठीक है, क्योंकि पहले से भी अजरबैजान का यही कहना था कि हमारी टेरिटरी है. So on September 20, Azerbaijan claimed full control over the contentious Nagorno-Karabakh region after local forces, mostly Armenians, agreed to disarm and disband. Nagorno-Karabakh is located within the international borders of Azerbaijan. It is in South Caucasus region, Caucasus Mountains, between Eastern Europe and Western Asia. Over 1 lakh ethnic Armenians from Nagorno-Karabakh have fled to neighboring Armenia in the last 1 week. ठीक है, सो सिंस आर्मेनियन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है. ठीक है, सो फाइनली अजरबैजान ने फुल कंट्रोल जो है वो होगी है इसकी अजरबैजान की ऑन दिस नगोर्नो काराबाग, जो काफी सालों से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही थी इस टेरिटरी पे. फाइन, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सर्कुलर माइग्रेशन. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द सर्कुलर माइग्रेशन? सर्कुलर माइग्रेशन यही होता है कि इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ माइग्रेशन कि पहले आप किसी कंट्री में जाते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां पर सिचुएशन बेटर है, आप काम करते हो. जब आपको लगता है कि मेरे घर डोमेस्टिक जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल आप यूएई में गए, वहां पे काम किया, लगा कि आपको नहीं अब इंडिया में बेटर हो रही चीजें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप अगेन कम बैक टू इंडिया. ठीक है, एंड इस तरह से आप आते जाते रहते हो इन अ सर्कुलर मैनर. सो इसी को हम कह देते हैं सर्कुलर माइग्रेशन. सो सर्कुलर माइग्रेशन क्या है? इट्स अ रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ माइग्रेशन वेयरइन पीपल मूव टू अनदर प्लेस, that is destination country, and back, that is country of origin, according to the availability of employment. ठीक है, तो एक इकोनॉमिक बेस्ड कॉन्सेप्ट है. फाइन, तो व्हाट एल्स इंपॉर्टेंट? सब पब्लिक पॉलिसी जरूरी है, डिबेट चल रही है वर्ल्ड वाइड विद इंक्रीजिंग फ्लूइड मूवमेंट ऑफ पीपल. पॉलिसी अराउंड माइग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, जैसे एआई के लिए हम देख रहे हैं पॉलिसी डिबेट चल रही है. एंड अगर हम विद इन इंडिया माइग्रेशन की बात करें तो हम इंटरनल माइग्रेशन भी बड़ी सारी देखते हैं. इंटरनल माइग्रेशन मीन्स
कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन, ठीक है, या एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेशन, जस्ट अ सेकंड, ओके, हाँ, तो सर्कुलर माइग्रेशन विद इन इंडिया अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पे भी आपको देखने को मिल गई होगी, ठीक है, लार्ज स्केल इन फैक्ट. So internal migration, which is migration within a particular country or state, has almost always been circular. ठीक है, कि एक जगह जाते हो, वहां पे कुछ टाइम काम करते हो, फिर वापस आ जाते हो अपने घर, फिर जाते हो, फिर काम करते हो, फिर वापस आ जाते हो. So it's a kind of circular migration only. With the advent of jobs in the manufacturing, construction and services sector, there has been a huge flow of migrants from rural areas to urban cities. And between 2004 and 2011-12, the construction sector witnessed one of the largest net increase in employment for all workers, specifically for the rural males or the rural migrants, you can say. So in India, the uneven development post-liberalization of 1991 has led to a lot of interstate migration, with states like West Bengal, Odisha, Bihar having some of the highest rates of out-migration. Fine. तो देख सकते हो ये सच्चाई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं. बट कुछ हमें इश्यूज भी देखने को मिली थी माइग्रेशन रिलेटेड, स्पेशली इन द southern states. So however, in such migration, especially to southern states where the language barrier is a big obstacle, rural circular migrants are often at the mercy of the middleman or the brokers. ठीक है, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, so of course you are dependent on some third party or third person. So finally, an important paper है, that is at the end of the day, as Amrita Datta in her paper Circular Migration and Precarity Perspectives from Rural Bihar says, in destination areas, rural or urban circular migrants remain at the margins of physical, social, cultural and political spaces. So it's a very very important, आप कहीं भी quote कर सकते हो इसको related to anything if you are writing related to the migration. So it is a high time that the states start actively formulating policies to understand the extent of circular migration. While some states like Kerala have announced health insurance scheme for migrant workers, नाम क्या है, आवाज health scheme, there needs to be more effort to ensure migrants' rights. The precarity of workers needs to be addressed, and there should be more efforts to integrate them in the destination states. कि जो भी वर्कर्स माइग्रेट करके डेस्टिनेशन स्टेट में जहाँ काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे और उनकी ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, सो दैट की हेल्थ जो है काइंड ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल इंश्योर की जा सकते हैं, बेसिक फैसिलिटीज एंड ऑल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी. सो अगेन यू हैव पॉलिटिक्स हियर, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं इससे. News click and news click only in the news. So we'll safely skip. Here we have politics. Okay. EWS ruling may help case for breaching 50% quota selling. कल हमने देखा था, and EWS पे 10% जो रिजर्वेशन दी गई थी by the government for in the of course for the general category people. So of course poorest of the poor जो है या among the general caste जो पुअर लोग हैं, so इकोनॉमिकली स्पेशली, so उनको दी गई थी. तो अभी उस पर रूलिंग आनी है सुप्रीम कोर्ट के, तो हो सकता है कि अगर उसमें वो चीज़ को एक्सेप्ट कर ली जाए तो 50% कोटा को अगेन ब्रीच करते हुए हम देख सकते हैं. पुअर शुड हैव फर्स्ट राइट टू नेशंस रिसोर्सेज, ऐसा कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, बिल्कुल ठीक बात है, होने भी चाहिए. ठीक है, सो ये सब कास्ट सेंसस के बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है हमें. उसके बाद हैवी डेथ रिपोर्टिंग इन टू महाराष्ट्र हॉस्पिटल्स. ट्रूडो सेज कैनेडा नॉट ट्राइंग टू एस्केलेट डिप्लोमेटिक क्राइसिस. कैन सी, इंडिया ने कहा कि अपने 41 डिप्लोमेट जो हैं रिकॉल कर लो इंडिया से. ICMR का प्रोजेक्ट चल रहा है टू एक्सेलरेट कैंसर स्क्रीनिंग मेजर्स ट्रीटमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ऑफ कोर्स इट्स अ गेम चेंजर फॉर इंडिया. will remain deployed in eastern Ladakh until full disengagement. IAF चीफ ऐसा कहा है BR चौधरी जी ने कि हम
डिप्लॉयड रहेंगे इन वेस्टर्न लद्दाख अंटिल फुल डिसएंगेजमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। टॉयलेट यूज डिक्लाइनिंग इन रूरल इंडिया सिंस 2018-19, वर्ल्ड बैंक के ये पेपर है, इसने ये कहा है, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर है जो डेफिकेशन फ्री एंड ऑल जो सारी चीज़ें देखने को हमें मिली, तो उसके बाद ये रिपोर्ट है कि टॉयलेट यूज जो है वो डिक्लाइन हो रही है इन रूरल इंडिया 2018-19 से अगर देखा जाए तो। ये वर्ल्ड बैंक का पेपर कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए दो न्यूज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो कहीं। Finally, we have this page from the world. So world news. Armenia's parliament votes to join ICC, straining ties with ally Russia. ठीक है, तो अर्मेनिया जो था, देखोगे कि अजरबैजान ने कैप्चर कर लिया है उस पर नगोर्नो कराबाख में। तो अब क्या हुआ कि अर्मेनिया को जो सपोर्ट थी वो रशिया करता था, बट अब जो है दोनों के बीच में रिलेशंस ठीक नहीं चलने वाले। एंड पार्लियामेंट अर्मेनिया के जो है इसने वोट किया है टू ज्वाइन आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। सो अब एंड आईसीसी ने ऑलरेडी वारंट जारी कर रखा है पुतिन के खिलाफ, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, कि वो कहीं दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं कुछ ऐसा तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अब अगेन ही वुड हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेवलिंग टू अर्मेनिया, क्योंकि इसने ज्वाइन कर लिया आईसीसी को। जो भी पार्टीज हैं, जो कंट्रीज हैं, जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, उनको गिरफ्तार करना पड़ता है अगर कोई ऐसा होता है। आफ्टर इलेक्शन मुइजू रिपीट्स हिज प्रॉमिस ऑफ आउस्टिंग इंडियन फोर्सेस। ठीक है, तो चाइना खुश है बट इंडिया के लिए गुड न्यूज नहीं है। ट्राइवो विंस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फाइंडिंग अ वेज टू सी इलेक्ट्रॉन्स। ये हम फर्स्ट पेज पे देख चुके हैं। Business news, manufacturing PMI slips to 5 months low and this is in the zone of 57.5, ठीक है। सो 50 प्लस हो तो हमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन बिलो 50 एंड तो 58.6 से हमें 57.5 देखने को मिली है इस बारी PMI इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विच ऑफ कोर्स इज ए कॉन्ट्रैक्शन। World Bank keeps India financial year 24 growth forecast है 6.3 on waning demand। डिमांड कम है, इस वजह से कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ रेट भी रिड्यूस कर दी गई, ठीक है। इंडिया विल मैनेज इफ ऑयल प्राइसेस गोज ओवर $100। अब देख सकते हो मिथेनॉल इथेनॉल प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, ब्लेंडिंग एंड ऑल। सो now from the sports page, sports only, fine. So that's it as far as today's Hindu discussion is concerned. Before we stop, let us have a look at the today's questions based on our analysis. So here we have questions from the today's Hindu analysis, that is Nagorno-Karabakh hostile region which was in news recently is located between. So you need to find the correct option for this. And second question is, with few frameworks available for auditing AI, auditors can only focus on the risk controls and governance structures that are in place to determine whether they are operating effectively or not. You need to discuss for a 15-marker question into 50 words. Fine? Yes. So that's it from my side. If you have any query, anything, we'll put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.